Why he moved to Middle East, what he did there. To be honest, for me it was a fun process, the hiring process. I was very clear from the very first day कि मुझे बाहर मूव करना है। 4 साल मैंने वहाँ काम किया, मैंने बैंक्स के ऑडिट किए, फर्म्स के अंदर ट्रेनी कल्चर मौजूद है, वहाँ पे वो comparatively better था। It took me 7-8 months to get a good job. My ex-colleagues were there already. You will have to think 3 times before saying anything. उन्होंने अपना work culture with the passage of time बहुत improve किया, especially if the labors of the general public. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आलिया हसन। आज हम फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आए हैं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप PwC से स्टार्ट ली और अपनी CA की इस जर्नी को कंप्लीट किया 2017 में, एंड देन ही मूव टू मिडल ईस्ट। नाउ व्हाई ही मूव टू मिडल ईस्ट, व्हाट ही डिड देयर और उनकी लाइफ कैसे सक्सेसफुल हुई, ये हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारे साथ हैं आज मिस्टर उमर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, जिस तरह आपने अपनी जर्नी जो है वो एक टॉप फर्म से स्टार्ट की PwC, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया दैट यू हैव मूव टू मिडल ईस्ट। इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उन्हें भी अब पाकिस्तान से बाहर बहुत फ्यूचर नज़र आ रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही होती हैं जो ल्यूक्रेटिव हैं। तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जब CA में आए तो आपने CA करने का डिसीजन कैसे लिया, इस चीज़ को फाइनलाइज कैसे किया और उसके बाद कैसी रही आपकी पूरी एकेडमिक जर्नी? Thanks a lot. Thanks a lot for having me first. I mean, मेरी जर्नी थोड़ा सी I think it's a bit funny start. मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक बैंक में हुआ करते थे, on a like he not even a clerk, he was like a very junior administrator type. और उनके साथ उनके एक दोस्त हुआ करते जो कि क्लर्क थे और उन्होंने मुझे वहाँ लेके गए। मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे हैं, इनसे मशवरा करें। मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक भी नहीं की हुई थी और वो जो थे वो आई थिंक जो उनके दोस्त थे वो शायद इंटरमीडिएट या बैचलर्स कुछ थे, but he was in bank, he was a clerk and he knew he has heard the name of CA, that's it. But he knew कि CA is a good opportunity because auditors वहाँ आते थे उनके पास and they used to see them, so they had a slight idea कि what the CA is. तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ऐसे करो, आप CA कर लो। Actually बिफोर दैट जब मैं उनके पास गया मैंने कहा, मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि आप BA कर लो, किसी ने कहा B.Ed एक होता है, बैचलर इन एजुकेशन, B.Ed और समथिंग, एंड ही टोल्ड मी ओके एक्चुअली डू CA. I said okay, that's fine, let's do CA. It was like not the educated decision at that time, but then मैं at that time I was in matric. फिर मैंने इंटर कॉमर्स से किया क्योंकि मुझे था कि अगर CA इज़ लाइक अ फील्ड ऑफ कॉमर्स और समथिंग तो लेट्स डू ICOM. तो मैंने कॉमर्स में इंटर किया और उसके बाद मैं फिर CA ज्वाइन किया. तो लाइक आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ हाउ आई केम टू CA इज़ लाइक जस्ट अ हंच. ओके, अच्छा, फिर जब आपने CA स्टार्ट किया तो आपको कैसा लगा? वॉज इट वेरी ईजी और वॉज इट न्यू और वॉज इट वेरी चैलेंजिंग? तो मेरी एक्चुअली एज आई सेड कि मेरा ताल्लुक कोरंगी के टू बी ऑनेस्ट एक स्लम्स एरिया से है, ठीक है. आई एम फ्रॉम स्लम्स एट दैट टाइम और हमारे स्कूल इज़ अ वेरी हमारे स्कूल में आप ये देख लें कि कोई भी टीचर इंटर पास भी नहीं था. मैट्रिक फेल और मैट्रिक पास वहीं के स्टूडेंट्स वहीं टीच करते थे, वहीं पढ़ाते थे, वो टीचर्स थे. तो आप यू कैन गेस के व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आई हैड. तो मेरा मैट्रिक तक की एजुकेशन वाज complete, I don't want to use the word but substandard I would say. और उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से किया जहाँ से I didn't learn much but yeah it was better than school but still जब मैं CA में आया तो I didn't know a lot of basic stuff like मुझे ग्रामर मैंने कभी नहीं पढ़ी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि इंटर और मैट्रिक में नॉवेल्स हुआ करते थे, वो हमने याद कर करके हमने उसके क्वेश्चन हम इस तरह करके हमने वो किया, ठीक है. तो ग्रामर, ये वोवेल्स, पार्ट ऑफ स्पीचेस, दी टेंसेस, ये मैंने वहाँ जाके इसी में देखे कि यार ये भी कोई चीज़ होती है. बट आई टुक लाइक इंग्लिश, आई टुक इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, राइट. सो यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज, यू कैन लर्न पश्तो, यू कैन लर्न सिंधी, एनी थिंग, सो यू कैन लर्न इंग्लिश एज वेल, राइट. सो मैंने उसको एज अ लैंग्वेज लिया, मैंने खुद पढ़ा उसको सारा, मैंने मुख्तलिफ लोगों से मशवरा किया कहाँ से पढ़ें.
दैट टाइम आई डिडंट हैव मच एक्सेस टू इंटरनेट. मेरे पास तो ना कंप्यूटर था ना मोबाइल था, इस तरह से कोई मोबाइल एंड्रॉयड कॉमन में नहीं थी एट दैट टाइम. इट्स 2011-12, ठीक है. तो आई वॉज yeah, so I mean the thing is my basic was nothing, so CA was very very difficult for me because मुझे कोई basic education नहीं थी. But one thing I had is the consistency and hard work. I think that's the main thing. उसकी वजह से मैं CA कर पाया शायद. I was very hardworking person. I'm not sure if I still am, but I used to be quite a hardworking person. तो मैंने hard work किया, मैंने मेहनत की at that time. So I find it very difficult, very challenging, but very fruitful. Great. So that's something very very inspiring for our students that you know आपने जिस तरीके से एक स्टार्ट लिया जहाँ पर आपको अपनी बेसिक्स पे भी डाउट है कि obviously they're not authentically given to you, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल बनना चाहिए, और उसके बाद भी आपने ऑप्ट किया एक ऐसा फील्ड और एक ऐसी सब्जेक्ट एरिया को जिसको लोग वैसे भी सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जो कि अच्छे बैकग्राउंड से भी हों, चाहे वो उन्होंने ए लेवल्स किया हो, लेवल्स किया हो, बट यू एक्चुअली एक्सेप्टेड द चैलेंज विच इज़ अ वेरी ब्रेव एक्ट. सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. अच्छा, उसके बाद आपका जब ये एक CA की जर्नी शुरू हुई, उसके बाद मिड में पहुंची, और उसके बाद फाइनली एक आर्टिकलशिप का टाइम शुरू होता है जो कि कैफ के बाद होता है. So what were you thinking? Because you said that your initial stages were very challenging. So obviously by the time of CAF जब आपकी वो complete हो रहा था, तो उसके बाद आपको कैसा लगा कि like when you were giving interviews and your CVs, sending your CVs to different big firms and all. So how was that experience? Yeah, it was. The thing is, जो 2 साल मैंने CA में लगाए CAF, at that time it used to be module A, B, C and D. So जब मैं module D तक मैं पहुंच गया था, तो I learned a lot of things on my journey, right? So I mean, I think I was at par with other people at that time. So 2 years was a lot of time for me. Or I was feeling very confident, very very powerful. It was because when I started module A, I was like, oh my god, I'm much behind them. I think they were 100 miles ahead of me, but later on I was okay. I'm to some extent I'm at par with them. Definitely I find, as I said, मेरी schooling बहुत से बच्चों की, वहाँ पे बहुत से स्कूल्स, बहुत से बड़े स्कूल्स के बच्चे थे, लाइक मॉडर्न स्कूल, OA लेवल्स के स्कूल्स के थे, जिनकी इंग्लिश वैसी थोड़ा सी बेहतर होती है. There's a language, but yeah, they speak it a lot in their schools. I've never spoken it before. So even in my CA journey, I think one of the things which I think every student should focus in their 2 years span before farm and even in the farm is communication. I think that's something everyone lacks. और वो मुझ में भी लैक थी, क्योंकि मैंने मॉड्यूल A to D मैंने टेक्निकल चीज़ें पढ़ ली थी, मैंने अकाउंटिंग, टैक्स वगैरह वगैरह सब मैंने शायद अच्छा पढ़ लिया था, बट what I didn't have is speaking or like communication skills. I lack it. But I mean, unfortunately मेरा competition भी कुछ at that time I think इतना ज़्यादा वो नहीं था. Communication other जो दूसरे कैंडिडेट्स थे मेरे साथ के, वो भी शायद bit better than me, a lot of them, but a lot of them was not better than me. और फिर मेरा कुछ टेक्निकल मेरी स्ट्रेंथ्स जो थी उसने मुझे हेल्प आउट किया. It was to be honest for me, it was a fun process, the hiring process. A lot of people find it very challenging, stressful. कि मेरा भाई भी CA के बाद इस process से गुजरा. I was stressed when he was applying, actually, to be honest, but I was not when I was applying. So it was a fun part for me because I have done the difficult part, I thought, and now it's easy part for me. But yeah, I think interviews were very crucial for students जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत एक important है. I would say अपनी communication में बहुत काम करें, क्योंकि जब आपने अपना कैफ कर लिया होगा तो आपको फर्म में जाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके इंटरव्यूज़ में, आपके टेस्ट में, ग्रुप एक्टिविटीज़, आई डोंट नो कौन सी फर्म्स कराती हैं, बट आई एम श्योर कोई कराती होंगी, तो उन सब में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स विल रियली हेल्प यू आउट. एंड आई थिंक नाउ व्हेन आई हाइंडसाइट मैं देखता हूँ तो आई कैन रियलाइज़ कि आई वाज हायर्ड, बट आई वाज लकी एंड आई कुड हैव डन मच बेटर अगर मैं कुछ इन चीज़ों पे काम करता है, स्पेशली कम्युनिकेशन पे. तो Excellent point, and I think you beautifully phrased it कि language is just a language. If we put an effort तो हम कोई भी language सीख सकते हैं, तो ये तो हमारी अपनी effort पे होता है.
So, अच्छा, तो this is a very good question answer. Basically, you told our students about your journey of getting into firm and किस तरीके से communication हर जगह जो है वो बहुत ज़्यादा prioritize की जाती है. अच्छा, फिर आपकी इस journey में एक change आया and that is that you moved to Middle East. So Middle East जाने का जो आपका decision था वो आपने किस तरीके से लिया? 4 साल की पीडब्ल्यूसी मैंने आर्टिकल पीडब्ल्यूसी की. सॉरी, आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस पॉइंट, बट आई जॉइंड आफ्टर पासिंग मॉड्यूल डी. मैंने पीडब्ल्यूसी ज्वाइन की और पीडब्ल्यूसी ज्वाइन करने के बाद 4 साल मैंने वहाँ काम किया. मैंने बैंक्स के ऑडिट किए, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑडिट किया मैंने ज़्यादा. आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि मुझे बाहर मूव करना है. आई वॉन्टेड टू हैव इंटरनेशनल करियर फॉर माई सेल्फ. तो that was clear in my head from the very first day. So and it's not because I think there is something wrong with the Pakistan, but it was my career ambition. Everyone has his own career ambitions, right? So मुझे था. और आपका सवाल ये कि कैसे मैंने जहन बनाया, तो I think that was in my mind कि हाँ मैंने internationally move करना है. A lot of reasons. One of the main reason is the exposure you have. Of course, Pakistan is a developing country. और इसके अंदर बिज़नेस के अंदर और हमारी अकाउंटिंग वर्ल्ड के अंदर वो मैच्योरिटी अभी नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पर मिडिल ईस्ट में है. फिर फर्दर जब मैं यूके गया, वो जब हम बाद में बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट यूके यूएस दे आर मोर मैच्योर मार्केट्स, मोर लेटेस्ट एडवांस मार्केट्स. सो आई एम यूजिंग it's just think like a technology. So like US use much advanced technology than Pakistan, right, or any other country. So every technology person, कोई भी IT का बंदा होगा, कोई डेवलपर होगा, कोई भी होगा, वो चाहेगा कि मैं US का काम सीखूं, मतलब of course. So similarly for me, career growth was always a first priority for me. I mean not in life, but it was a priority for me, I would say. तो मुझे मिडल ईस्ट was my first stepping stone. I wanted to move toward west like UK US. So but I didn't get opportunity for UK US at that time. मुझे मिडल ईस्ट की मिली. I opted for it. There was other reasons, but main other reason was that. So I just joined Saudi EY Jeddah that time. Okay, so as you just said कि आपका एक it's a dream goal for you that you wanted to move out from Pakistan, और आपने जो भी पहली opportunity grab की, so it was from Middle East and you opted for that. अच्छा, so when you moved to EY Jeddah, तो आपको वहाँ काम करने के बाद अगर आप एक comparative analysis करें तो आपको अपनी firm और वहाँ की firm में क्या एक major difference नज़र आया in environment, in technicalities or in other aspects? Okay, being very honest and frank, EY जद्दा या मिडल ईस्ट की अक्सर फर्म्स जो हैं वहाँ पे जो माहौल है वो डिफरेंट है. ऑफ कोर्स देयर इज सम डिफरेंस. सो द मेन डिफरेंस इज़ यहाँ पर एक फर्म्स के अंदर ट्रेनी कल्चर मौजूद है कि एक ट्रेनी आता है वो बिल्कुल ट्रेनी होता है. अनफॉर्चुनेटली बट हमारी फर्म्स में प्रोफेशनलिज्म उस लेवल का नहीं है जिसका होना चाहिए. आई थिंक दे माइट बी चेंजिंग, दे माइट हैव चेंज नाउ, आई डोंट नो, बिकॉज मैं पाकिस्तानी फर्म से पिछले आई थिंक 6-7 साल से टच में नहीं हूँ. लेकिन एट दैट टाइम आई थिंक देयर वर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द फर्म्स. वहाँ पे वो कंपैरेटिवली बेटर था. आई एम नॉट सेइंग सऊदी इज नॉट वाज देन हियर, और वन ऑफ द रीज़न इज everyone was employed there. You had a responsibility. Here everyone is trainee and you don't, everything, how you talk to others, how you communicate things, how you deal with the stuff, how do you handle clients, how do you handle your juniors, especially juniors, seniors and juniors as well. Everything is different, is like much more unstructured, immature, and I mean I would say a bit like a school environment. This is still people like I think this environment is still like a school here, which is not the case in Middle East. So it was a bit better than this. Employees were employees, they have responsibility, they had to be careful with their dealings as well. Or it's a environment, it's a top down thing.
कि आपके पार्टनर्स जो फॉर्म में पार्टनर डायरेक्टर्स होते हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजर सीनियर मैनेजर नीचे फिर वो एक हायरार्की होती है. आई थिंक दैट वाज a change from here to there. Okay. I found it a bit change. So that's very precise again कि एक आपको top down hierarchy का अंदाज़ा हुआ बाहर जाके. Secondly, what you just said that you know here still we have a passive environment where people like to control their trainees as if that they don't know anything. और human rights पे I think इतना ज़्यादा उनके ऊपर focus नहीं हो रहा कि how to deal with the clients, how to deal with the juniors, subordinates or something which you found there, जो कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आया. और सेकंड जो आपने सबसे अच्छी बात की कि वहाँ पर ट्रेनी या नया बंदा भी जो है उस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर हिज ओन डीड विच यू फाउंड हियर लैकिंग in the environment. So I think that's the major difference you found. Acha, then working in EY Jeddah, how have you decided to move to UK finally? Okay, so as I mentioned कि हमेशा से मुझे ये था कि मुझे career ambition, I was always wanted to move to US or UK. That was my first thing, and Middle East was the first offer I got. So I thought, okay, this is a good way. Let's go there, and then I can go from there to there. So then I've been the day, I mean, मैं जब सऊदी EY Jeddah में गया तो मैंने शुरू में the first 3-4-5 months I was learning things. I focused on work and everything, and I just like wanted to have like to learn how things work there. But then within 3-4 months I realized कि यार I think that place is not for me. Anyway, that was a stepping stone for me anyway. But then I realized कि मैं यहाँ पे long term right now नहीं रह सकता. I need to go out. So I started hunting for the job from that day, and then I keep trying, and then I think it took me 7-8 months to get a good job in UK. I got an offer from there. I applied online. Then I got some referral. I mean, after applying and after getting interview call, मुझे पता चला कि वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे. मैंने उनसे भी फिर बात की, उनसे मशवरा किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया. So I applied online. It was always my plan. And but your links, the people you work with, your peers, your colleagues, they help you out definitely, because my ex-colleagues were there already. जिन्होंने मुझे बहुत help out किया in everything, from interview till my landing in UK, all the way. No doubt, you learn from your peers and they are always your referrals. अच्छा, आप वहाँ पर भी गए तो माशाल्लाह पहले आप जैसे जद्दा में भी आप EY में थे, which is also one of the top firms of audit, and then you joined Deloitte UK. So then after that you moved to PwC again in UK as well. So how is this shift from Deloitte to PwC in UK? Well, first I think, do you mind if I talk a bit about the shift from EY Jeddah to Deloitte. UK? Okay. So the difference, the move from Middle East to UK was huge. I mean, cultural shock was there from Pakistan to Saudi, but it was not that big. It wasn't that big. Yeah, but then the cultural shock from Middle East or Pakistan to UK was huge. And a lot of people can't cope up with, I know. और वो चीज़ जो है वो, but I mean I'm good. I think I'm a flexible person in this way. I can adjust myself, flex myself in accordance with the environment to some extent. तो मैंने adjust किया, but it was a big shock. Everything is different there. Professionalism is on its peak. You can't say anything. You will have to think 3 times before saying anything. You can't just write an email and just hit send. You will have to reread it 2 or 3 times. You do it. I mean, after spending 5-6 years there, I still do it. आज मुझे 5 साल हो गए, and लोग ऐसा कहते हैं. I'm not sure how true is it, but they say, okay, I know मेरी communication is not that bad, I would say, but I still read my emails twice or thrice before I send it, especially if the audience is important. I mean, if it is client email, I mean, something is even chatting with your teams, with your juniors, you need to be careful, but you need to be extra careful when you're chatting with your clients or external parties, other stakeholders. So those things were big shock, the cultural shock from Middle East to UK. Communication is not language only. Language, yes, but then communication.
how you react, how you express, how your body language is, how you look at the things, how you respond to the situations, how you deal with the problems. All those things are um, very different from there, and very good, I would say. I mean, I think they have, उन्होंने अपना वर्क कल्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत इम्प्रूव किया है. देयर इज़ अ हिस्ट्री, राइट? Capitalism has a history of labor exploitation. If you go back in the Exactly. due to which Marx came, Karl Marx, and then that communism started. Although the communism की जो पैदाइश थी, जो उसकी जो create हुआ, the reason was exploitation of the laborers. Exactly. But then West ने उसको counter करने के लिए laborers को बहुत से rights दिए. I mean, so that society has grown actually. It has matured in all the aspects of the life, especially of the labors of the general public, and that is reflected in your firm's environment as well. So that thing has so the labor, the environment, the work culture is much more sophisticated, much more mature, much more respectable. I don't know. And mindful, I guess. Mindful, yeah. Than anywhere else, than Middle East or Pakistan, I would say, at least जहाँ मैंने काम किया है. So those are the big shocks. To be honest, shock from UK, Deloitte to PwC UK was not too much. It was very same culture, everything was same, and it was audit, so it was not very big because both are big four firms. So I won't say that the jump from Deloitte to PwC within the UK was huge, but this Middle East to UK was very big. I spent a bit on this one, but I think that was needed. I think the cultural shock is the right word for what you just said, क्योंकि एक country जो कि मिडल ईस्ट है, और मिडल ईस्ट वो जो हमारे कल्चर से, जहाँ से हमने अपना कल्चर भी स्टार्ट किया है. सो और वही बात है कि लाइक एक मुस्लिम बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग, एंड देन मूविंग टू वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान एज वेल. तो आप सही कह रहे हैं कि कल्चरल शॉक आता है. और प्लस ये कि जो आपने बताया कि वहाँ पे जिस तरीके का प्रोफेशनलिज्म है, जिस तरह की मेच्योरिटी है, जिस तरह की थॉट प्रोसेस है, वो बहुत माइंडफुल है. एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, एज यू सेड, कि अगर आपका पूरा सिस्टम ही ऐसा है तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, नो डाउट. अच्छा, फिर आपने फर्म्स को अचानक से स्विच किया एंड यू टेक इट न्यू टर्न एंड यू जॉइंड अ प्राइवेट इक्विटी फर्म. सो आई लाइक हाउ दैट इंडस्ट्री में कैसे आए आप? आई मीन इट्स फनी, आई थिंक सरप्राइजिंगली जब मैंने PwC पाकिस्तान में ऑडिट में ज्वाइन किया तो विद इन अ ईयर आई सेड ओके, आई डोंट वांट टू बी इन ऑडिट, मैंने निकलने ऑडिट से. एंड देन आई स्पेंट 9 years इन ऑडिट. ईच ईयर हर साल में ये कहता था कि अब मैंने ऑडिट से बाहर निकलना है, अब मैंने ऑडिट से बाहर निकलना है. बट देन समहाउ ऑडिट ऑलवेज pulled you back. Yeah, pulled me back. So but then I was in UK. I have spent almost 4.5 years in audit firms, जहाँ मेरा मेन ऑडिट क्लाइंटेल जो था वो प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, ये वाले फंड्स थे, जिसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग कहते हैं. तो मेरा क्लाइंटेल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का था, क्योंकि मैं जर्सी ऑफिस में रहा हूँ हमेशा. तो जर्सी ऑफिस इज़ ऑफ शोर, और ऑफ शोर में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स इज़ वेरी पॉपुलर थिंग. तो फिर मैं इसी इन्हीं के साथ काम, जिस कंपनी के वन ऑफ द फंड एडमिनिस्ट्रेटर जिसके साथ मैं काम कर रहा था, वहीं मैंने वहाँ एक जॉब आई थी जो टेक्निकल अकाउंटिंग मैनेजर की थी, जिसमें हम अकाउंटिंग कंसल्टेंसी रोल था एक्चुअली, काइंड ऑफ, जिसमें हमें अकाउंटिंग कंसल्टेंसी भी करनी थी. इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा काम थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. क्लाइंट ऑपरेशंस में था. तो देयर वाज आई कुड सी पोटेंशियल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिजनेस डेवलपमेंट वाली साइड पे भी मैं इन्वॉल्व हो सकता था, सिस्टम्स वाली साइड पे भी, एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली. सो दिस वाज अ मिक्स रोल, not a typical reporting role, but like more like it was a bit like a financial controller role, but as a service provider, not as a fund itself. तो मुझे ये काफ़ी अपील किया इस रोल ने. और as I said, I always wanted to move to industry, but I never got a good opportunity. जिस समय कहूँ मैं, yes, this is a good opportunity, I should move it here, I should move here. तो मुझे ये वाली opportunity अच्छी लगी. I thought कि I should avail it, और मैंने उसके लिए ट्राई किया and I got the job. तो मैंने इस तरह इंडस्ट्री मूव कर दिया.
सो व्हाट डू यू थिंक कि गुड अपॉर्चुनिटी जो है उसकी डेफिनेशन आप कैसे देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ तो नज़र आ रही होती हैं बट दे डोंट हैव दैट गट फीलिंग कमिंग अप, और दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर जहाँ पर वो ये डिसाइड कर सकें दैट दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड. सो हाउ विल you help them or guide them to understand कि what is a good opportunity? Yeah, I think first thing is gut feeling वाली चीज़ हमेशा हमें इसको I'd never go on my gut feelings. I always think about things. So I think you need to analyze कि आप ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन है आप उसे एनालाइज करें, including career, including any opportunity you are getting. Analyze it, pros and cons, what are the pros, what are the cons, and then decide it on that basis. So I mean, I think a typical person, और मैं भी उसी तरह सोचता हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी को मैं I think the question is how you assess if it is a good opportunity, if it's a bad opportunity, how to go for that. So I think you need to see what are your career ambitions, what you want to achieve, where you want to go, and then find your opportunities in that directions. For me, I see a couple of things. One is कि मेरी करियर ग्रोथ उसमें हो, मेरी प्रोग्रेशन हो, मैं कुछ नया सीखूं और मेरा रोल विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हो, मुझे सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलें. दैट्स वन ऑफ द थिंग. देन यू ऑल्सो सी के अगर इफ what is the monetary terms, how it is helping you in monetary terms. I think the more important is what is the work-life balance in something. So for example, if you want to be investment banker, you can be investment banker as a very good route. Money is crazy, but your life is quite difficult one, because the working hours can be 15 to 18 hours each day consecutively for a year, something like this. So like there are challenging roles which give you good money, but then it's like it's up to you what's important for you. It's work-life balance important for you, then you shouldn't go those kind of places. So I think all these things, I think opportunity you should analyze in a way कि how it will help you. For students, I would say one thing is very important, especially पाकिस्तान में जब आप ऑडिट में होते हो ना, तो आप बहुत से लोगों को बहुत मैं भी ऐसा ही था शायद कि ऑडिट से निकलना है, इंडस्ट्री में चला जाऊँ, पाकिस्तान में अच्छे पैसे दे रही हैं, टैक्स में चला जाऊँ, अच्छा काम है, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी में चला जाऊँ, इंटरेस्टिंग काम है, पैसे भी अच्छे हैं. Now if you want to stay in Pakistan, go to industry, because your chances of mobility reduced when you move out of audit, your work-life balance improved, your salary is better in industry probably most of the places, but the chances of mobility will reduce. Okay. So if you don't want to, if mobility is not important for you, then that's fine, move out of industry, out of the audit to the industry. So I think it's what is good opportunity, what is bad. There's no one size fit all definition for it. So it depends on particular situation, each person, his or her circumstances, कि उसके लिए क्या important है. But then analyze your opportunities in that way. Definitely if you want to move out of Pakistan, क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे मैं I'm not a ambassador to pull people out of Pakistan. I'm saying this because I know other places. I don't know Pakistan. I have never worked in Pakistan after my 4 years of articleship. So I cannot comment. मैं comment नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में कैसे आप progress करोगे तो क्या करो. That's why I'm talking, if you want out of Pakistan, definitely stay in audit, and then your chances of mobility are much better than there. Yeah, I think this is again a very detailed and a very specific answer कि अगर आपको एक thorough speculation के through आप कोई decision लेंगे तो that would be much easier. Don't rely on guts feeling, क्योंकि बहुत सारे opportunities तो आती रहती हैं, but to understand them तो आपको ये speculation तो करना है कि what are the pros and what are the cons, and I think. You mean analysis? Don't speculate. अच्छा. Analyze. I mean that's what I'm trying to say कि that's what I'm saying. A lot of time we speculate on things, but we don't analyze it. So I'm saying. Okay, so to keep all the facts in front of you and then analyze it. Okay, that's a great thing. And especially ये वो आपने बताया कि उन students के लिए जो especially पाकिस्तान से move करना चाहते हैं, वो audit firm ज़रूर join करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपके लिए mobility
बना देता है. नॉट यही एक रास्ता है, बट यस दिस इज मोस्ट द चांसेस आर बेस्ट. Yeah, so it's the easiest way. मे भी लोग जाते हैं कि इंडस्ट्री से भी होके चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, लेकिन चांसेस आर मच मोर. Plus, you're also getting a very good experience Yes, and learning through it. definitely. Okay, I think that's fair enough. अच्छा, उसके अलावा मुझे आपसे ये पूछना है कि सर, now that you have achieved so much and you have lived abroad and you have seen so many different cultures around you, so tell us something about your social life. So you just said that work-life balance is very important, and I think when you analyzed all the pros and cons of you moving from audit firm टू इंडस्ट्री, तो आपने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा. सबसे पहला तो ये कि आपकी लर्निंग एंड ग्रोथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक हर एम्पावर्ड इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी लर्निंग हो, उसकी ग्रोथ हो. और सेकंड आपने बोला कि मॉनेटरी, ऑब्वियसली मॉनेटरी भी हमें देखना होता है बेनिफिट के हमारे पास ज़्यादा है नहीं है, किस तरह से आ रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. एंड द थर्ड थिंग यू टॉक्ट अबाउट इज़ द वर्क लाइफ बैलेंस. तो अब आप ये बताइए कि being a Pakistani citizen living in UK, we have a lot of myths and we have a lot of queries and different kind of thought process going on in Pakistan के UK में पाकिस्तानी जो हैं वो इतनी आसानी से accept नहीं होते या बहुत ज़्यादा racism उन्हें face करना पड़ता है. So how was your experience? First, I don't think I've achieved so much, but thanks for the compliment. I think whatever I achieved so far, on that basis, on the basis of my experience, I think पहला आपका पार्ट था कि पहला आपके क्वेश्चन के एक तो पार्ट था रेसिज्म वाला, और इससे पहले आपका क्या पार्ट था क्वेश्चन? मैंने सिर्फ आपकी सोशल लाइफ कैसी है? सोशल लाइफ कैसी है सर, 2 चीज़ें थी. सोशल लाइफ, आई हैव अ वेरी एक्टिव सोशल लाइफ. मैं एक आइलैंड पे होता हूँ, जर्जी इसका नाम है. हमारे बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, बट वी आर क्वाइट क्लोज कम्युनिटी, और वहाँ मुख्तलिफ दोस्त हैं हमारे. हम हर वीकेंड पे मिलते हैं. हम लोग अपनी 2-3 घंटे बाद का वीक में 2-3 दफ़ा भी मिलते हैं. अक्सर हम दोस्त जिम साथ जाते हैं, पाकिस्तानी दोस्त हैं सारे. तो वी हैव अ वेरी गुड लाइक बॉन्डिंग. ओके. और हमारा वीकेंड की बैठक जिसे बोलते हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे होती है. और हम घूमने भी चले जाते हैं यहाँ वहाँ. यूरोप की साइड में दोस्त चले निकल जाते हैं कभी, ओवरऑल अदर पार्ट्स ऑफ द यूके एज वेल. सो इट्स अ वेरी दैट्स द फ्रेंड साइड. देन आई हैव वाइफ एंड माई किड्स जिनको मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ. Audit में one of the challenge I had was I was not able to give a good time to my family. The eldest one is 3 years, so he now needs some attention. Exactly. Which might be difficult for me in order. For some people it's fine, but for me it was a bit challenging. So I think बच्चों को time देना and all those I'm doing. I think I'm trying to do from my. I think I'm doing fine on that side. My wife might not agree. No, but no, that she's also fine, to be honest. Okay. So I think that side, and a very important thing which I think I should have mentioned, but I want to mention is I do a lot of social charity work in Pakistan. From there, क्योंकि वहाँ पे आपकी करेंसी, अब यू हैव एडवांटेज ऑफ करेंसी, देन यू हैव एडवांटेज ऑफ अ गुड सर्कल ऑफ पीपल. तो हमने अभी फ्लड पाकिस्तान में आए थे, तो हमने आई थिंक मोर देन 4-5 मिलियन 4-5 million, yeah, 10 lakh is, yeah, okay. So more than 5 million I think हमने यहाँ पे हमने donate किए थे. more than that, 7-8 million probably, more than that. हमने यहाँ पे घर बनाए, लोगों को घर बना के दिए, जहाँ फ्लड में जिन लोगों के घर इम्पैक्ट हुए थे. हम मेडिकल केसेस में, इमरजेंसी मेडिकल केसेस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं. बहुत से जो लाइफ सेविंग केसेस होते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं. बहुत से इंटीरियर के लोग हैं या दूसरी तरह के लोग यहाँ पे हैं जो यहाँ से इलाज के लिए आते हैं. हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, और वो हमें फिर इसमें पूरा स्क्रीनिंग करते हैं और सब हेल्प आउट करते हैं. तो आई मीन आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क, एंड आई मीन आई ऑलवेज हैड लाइक सिंस द वेरी फर्स्ट डे आई वॉज ऑलवेज, मेरा ये था कि यार मैं कुछ भी करूँगा, मैं कुछ बनूँगा, तो आई विल नॉट बेनिफिट माई सेल्फ, माई फैमिली, माई वाइफ, माई किड्स, माई मदर, फादर, दैट्स इट. नाउ आई ऑलवेज थिंक कि भाई मेरा सर्कल, द बेनिफिशरी ऑफ माइन शुड बी मच, द सर्कल ऑफ माई बेनिफिशरी शुड बी मच बिगर दैन दैट. आई ऑलवेज ट्राइड दैट. सो मैं सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करता हूँ. सोशल में जो इस पार्ट पे मैं बात मैंने की, दैट आई डू अ लॉट. So that's, I think everyone should do it.
बिकॉज आई थिंक जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो ऊपर वाला आपके लिए भी बहुत कुछ करता है. बेशक. Don't do it for that reason, of course, but definitely you will have it. I mean, I think to be honest, as I said, I'm from slums, and I've been here. It was not a easy journey, but I think it was a fun journey, and it's because कि मैं हमेशा शायद इसलिए कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये चीज़ डाली है कि मैं हमेशा किसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ. Even when I had nothing, I wanted to do something for them. I did what I could have done at that time. So that's, I think, very important aspect. That's a very beautiful thought process you have, and community service जिस तरह आपने बोला कि that's a ये बहुत कम होता है कि लोग जो है वो अपनी ज़ात से बढ़कर सोचें, and you are actually a contributor. So we can also give a living example of contributors sitting with us today in our program. अच्छा, so my last question to you is that कि आप अपने आप को फ्यूचर में, like in future pace, how do you see yourself and where do you see yourself? Well, to be honest, I don't know. Like any plans or something? I mean, I used to plan for my life a lot. मैं हमेशा 5-10 साल का प्लान करता था कि अगले साल ये करूँगा, और I mean, fortunately, और I think अल्लाह की फजल से मैं जहाँ प्लान करता था मैं उससे पहले वहाँ पहुँच जाता था. मैं जो चीज़ मैं सोचा मैं 10 साल में करूँगा वो मैंने 3 साल में कर ली, और जहाँ मैं 5 साल में जाऊँगा वहाँ मैं शायद उससे पहले चला गया. तो but now I mean, I think I stopped doing that. Now I don't plan much. I don't do, okay, I'll do this in 5 years, 10 So years. you live in the now? I live in the now. Oh, that's or great. But I mean, students should not live in the now. I can live in the now. Obviously you have already I think I have already a lot. मुझे अगर कुछ ना भी मिले और जो मेरे पास है, I think I can live on that one, on that. But I always try. That doesn't mean I don't do work. Yeah, exactly. I still do a lot. Now my whole focus is, okay, how many, मैं कितने और लोगों को फ़ायदा दे सकता हूँ. Now I always think like this. फ्यूचर प्लान्स, मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एजुकेशन इदारा कायम करूँ जिससे मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आई थिंक माई लाइफ वॉज चेंज बिकॉज ऑफ एजुकेशन. सो आई थिंक आई शुड ऑल्सो चेंज अदर्स लाइफ इन द सेम वे. Right. So that's my future, one of the future plan. I don't know when it will materialize. Very soon, inshallah. Hopefully soon. And then I want to grow in my own career a lot. I want to see my family, my cousins, my relatives grow with me. I want them to. So that's my future plans for them. Great. Yeah. So on the very last note, what advice you want to give to the CA students who are looking forward to articleship? Okay, that's a good one. Actually, I have some. I would like to give some advice for both kind of students. So, those who want to join CA, who have not joined CA yet, for them, of course, think about it. It's a very good. It's a very good career to have, but at the same time, it's a very challenging one. बहुत से लोग CA में आपने बहुत सुना होगा कि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चे आते हैं और दे वेस्ट द years and years of life and then they go back. Few advices. Number 1, don't think कि आप आओगे, आप क्लास अटेंड करोगे 2-3 घंटे और आप चले जाओगे and then you will just pass the exam. I think it will not work here. So you need to be committed. If you are joining it, you need to be committed. You should be ready to work hard. You should be ready to work like crazy hours when needed, study like crazy hours. So आपके अंदर मेहनत, कंसिस्टेंट मेहनत, ऐसा नहीं कि एक आपने एग्ज़ाम के वाले 1 महीने पढ़ लिया बाकी पूरा 5 महीने आप फ्री रहे. Again, that approach won't work here. So you need to be committed and you need to be focused. That's 2 main advices for those who are looking forward to join the CA. And the motivation for them is it's a very good career. I mean, अगर पाकिस्तान में कोई 2-3 big career, best career होंगे तो I think CA is one of them probably. There's very good career. You have a very good bright future if you are in this career. The Institute of Chartered Accountants Pakistan, जो कि पाकिस्तान का CA है, is a very good and well recognized body. So it should be a proud for someone to be associated with this body. So I think there are a lot of good things in this career as well. This is for those who want to join. Anything specific you want me to cover for them? नहीं, I'm just asking. The other question was कि articleship के लिए जो आप apply कर रहे हैं उनके लिए आप क्या? उनके लिए बहुत सारी चीज़ें. उनके लिए पहली बात अपनी communication पे काम करें.
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडवाइस उनके लिए भी है जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको जॉब्स के लिए, जो मैं एक चीज़ देखता हूँ जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी सीए बाहर यूके स्पेशली आता है, फर्स्ट आता है जब वो, तो आई फाइंड इट रियली सो जो चीज़ उनमें लैक करती है वो कम्युनिकेशन है और उनका प्रोफेशनलिज्म है। वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो अपनी डिलीवरी में, कमिटमेंट में प्रोफेशनल नहीं होते। आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। वो ओवर कमिट करते हैं। हाँ ये काम है, 10 काम जमा कर लेंगे, हाँ हम इसको 3 दिन में कर लेंगे, जबकि उन्हें पता है कि 3 दिन में उन्हें बहुत स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने आप को। शायद वो 4-5 दिन का काम है, लेकिन वो 3 दिन कमिट करते हैं। और देन when they deliver it sometime half baked or like not to the mark. This mentality is very bad. I mean गोरा mentality, या फिर actually इंटरनेशनल लेवल में अगर आपको लगता है कि एक चीज़ 4 दिन लेगी तो जस्ट से 5 दिन on the safe side and do it very good. Under promise, over deliver rather than over promise, under deliver. This is one example I'm saying. So इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लैक करते हैं. So I think communication, problem solving skills, these two are the most important skill in anyone. This advice is for those who are looking forward to join articleship and also who are doing articleship. इसके अलावा आर्टिकलशिप वालों के लिए जो जिन्होंने अभी इंटरव्यूज़ देने, उनके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, अपने कोलीग से पूछें, दूसरे दोस्तों से पूछें कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरव्यूज़ में, क्या चीज़ें प्रिपेयर करना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ें, अपडेट रखें अपने आप को। फाइनेंशियल टाइम्स, टू बी ऑनेस्ट मेरी एक आदत है, सुबह उठता हूँ और पॉडकास्ट, आपकी मोबाइल ऐप में एक एप्लीकेशन होती है, एप्पल में भी होती है, गूगल पॉडकास्ट भी होती है, जो भी आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, आप उसमें पॉडकास्ट में फाइनेंशियल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। इस फ्री सब्सक्रिप्शन, तो सुबह 10 मिनट्स सुने, 10 मिनट्स में वो आपको पूरी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देते हैं। एंड दैट्स इट। ये आप करें, इसको आप डेली कैसे करें, इर्रिस्पेक्टिव यू आर गोइंग फॉर आर्टिकलशिप और नॉट। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द थिंग, सो दे विल बी अपडेटेड, up to date with the world, and also focus on a lot of things. Try to understand the business. आप अपनी स्टडी करते हैं, इसके साथ एक्चुअल लाइफ में सोचें कि जो आप स्टडी कर रहे हैं इसका क्या पॉसिबल यूज़ हो सकता है, इसकी क्या implications हो सकती हैं. I think majority of the things we are studying in our CA are actually practical. Sometimes we are not able to figure it out, and sometimes we are not doing it right way, but they are practical. So think about it, practical aspects, everything. So that way, that's a very important thing I think for them. So communication, news, अपने आप को अपडेट रखना, अपनी इंटरव्यू स्किल्स पे काम करना, जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट ही एक्चुअली, and keeping themselves up to the date. Those are very important advices for them from my side. Thank you so much for being here today with us. So students, this was Mr. Umer Rehman, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट तो पाकिस्तान से की, लेकिन अब वो सेटल्ड हैं यूके में। और आज जो बातें उन्होंने हमें बताई वो 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए थी। नंबर 1, वो स्टूडेंट्स जो सीए ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस इज़ अ वेरी रिगरस जर्नी, नो डाउट इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड इट गिव्स यू न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन ये आपसे एक कमिटमेंट मांगती है, एक ऐसी कमिटमेंट जिसमें आपकी मेहनत और आपकी लगन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं या कर रहे हैं या बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, that please work on your communication, because if you do not communicate well, you cannot survive in the international environment. And one more advice which he gave in the end is that कि अगर आप एक professional qualification हासिल कर ही रहे हैं तो learning is not a bad thing. So please keep it going with ACCA exemptions and also your BCom degree, क्योंकि ये आपके लिए 2 वो आसानियाँ हैं जो आपके वीज़ा प्रोसेस में या आपको बाहर जॉब दिलवाने में बहुत काम आएंगी. So I hope this interview was a very insightful interview for you. Till next week, take care. Allah Hafiz.